Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSat Institute of Information Technology, and today is our lecture number 20 regarding the course issues in accounting practices. As we are on the part 2 of our course line, the course outline, that is corporate accounting concepts and issues. In the previous lectures, what we have done is regarding the cash and receivables. क्या होते हैं cash receivables, कैसे work करते हैं. Then we have adjusted further things regarding these cash and receivables. So today what we are going to do is the revenue recognition. कि हमने revenue को recognize करना है. कैसे revenue को recognize किया जाता है? What are the basic things that are involved in the recognition of the revenue? So starting with the lecture. So first talking about the learning objectives. कि learning objectives क्या-क्या exist करते हैं. First of all, apply revenue recognition principle. Describe accounting issues of revenue recognition at point of sale. Apply the percentage of completion for the long run contracts. Apply the contract completed method for the long term contract. Identify the proper accounting for losses on long term contract. Describe the installment sales method and explain the cost recovery method. Now these are the whole objectives that we are going to cover, but इस टॉपिक को हमने दो लेक्चर्स में डिवाइड किया हुआ है. यानी यू कह सकते हैं कि दैट इट हैज डिसेमिनेटेड अमंग टू लेक्चर्स. एक तो आज का लेक्चर है, एक द सेकंड वन वुड बी द नेक्स्ट लेक्चर. जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट इज आल्सो बीइंग ऑन द रेवेन्यू रिकग्निशन, कि वो रेवेन्यू को कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं. सो टुडे वी आर जस्ट कवरिंग सम ऑफ द टॉपिक्स एंड सम अदर टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर. Okay, ji, these are the topics that we are going to cover. First of all, we are going to study current environment, guidelines for revenue recognitions, departure from sale basis, revenue recognition at point of sale, sales at discount, sales with right of return, sales with buyback, bill and hold sale, principal agent relationship, trade loading and channel stuffing, and then multiple deliverable arrangements. Then revenue recognition before delivery, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड. यहां तक हमारा लेक्चर आज का कवर अप होगा. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट मेथड, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट लीजेस, डिस्क्लोजर्स, कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन बेसिस, इंस्टॉलमेंट सेल्स मेथड, cost recovery method and summary, and also being a deposit method. So that's we have disseminated among these two lectures, और इसी को हम लोग further आगे लेके जाएंगे और इसे हम कहेंगे that is the revenue recognition. So starting with our first topic, that is regarding current environment, or first we are talking about the realization principle, because realization principle is a part of current environment. So starting with the realization principle होता क्या है? रियलाइजेशन प्रिंसिपल एक्चुअली उसे कहते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग कि किस टाइम किस चीज को रिकॉर्ड करना है. फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज अगर हो नहीं रही, आप उसे रिकॉर्ड कर रहे, तो दैट मीन्स योर रियलाइजेशन के बगैर आपने उसे रिकॉर्ड कर लिया. हमने प्रीवियस लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, रियलाइज्ड वैल्यू एंड नॉन रियलाइज्ड वैल्यू. हम लोग कहते थे सरप्लस एंड रिवैल्यूएशन जो भी होता है वो नॉन रियलाइज्ड वैल्यू होती है. क्यों नॉन रियलाइज्ड वैल्यू थी? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कि हाँ जी ये हमारे पास सरप्लस में है, बट हमें ये लग रहा होता था कि जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि दैट अ सिंगल पेन हैज अ मार्केट वैल्यू ऑफ 10 रुपीज, लेकिन मैंने जब खरीदा था तो 5 रुपीज का था. अब मैं कहूं कि अगर मैं मार्केट वैल्यू भी लिखूंगा बुक में, जिसे मैं कहूंगा सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट ऑफ 5 रुपीज, तो वो नॉन रियलाइज्ड वैल्यू है. जबकि रियलाइज्ड वैल्यू कितनी है? दैट इज 5 रुपीज. सिर्फ 5 रुपीज ही रियलाइज्ड वैल्यू में आएगी. दैट मीन्स आवर रियलाइजेशन प्रिंसिपल डिपेंड्स ऑन व्हाट वी हैव गिवन इन अ कैश, कि जो भी चीज हमने कैश में दी है उसी को कहेंगे दैट इज नोन एज रियलाइज्ड वैल्यू. सो देयर इट इज अ रियलाइजेशन प्रिंसिपल फॉर रेवेन्यू, कि रेवेन्यू को कब रियलाइज करना है, कब रिकॉर्ड करना है. सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. Revenue are the inflow or the other enhancement of assets of an entity or settlement of its liability, or a combination of both, for delivering or producing goods, rendering services or other activities that constitutes the entity ongoing major or central operation. Record revenue कब record करना है? The earning process is complete and or virtually complete. क्या अगर आपको पता लगे earning process complete हो जाए, या there is a reasonable certainty at the collectibility of assets of receivables, या तो तब जब अर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए आपका, वर्चुअली इट इज कंप्लीट, और इफ देयर इज अ रीजनेबली सर्टेनिटी इन अ कलेक्टेबिलिटी, कोई कलेक्टेबिलिटी में कोई सर्टेनिटी एग्जिस्ट करती हो. यानी इन दो कंडीशन में ही आपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं कर सकते हम रेवेन्यू को.
Now the realization principle. Revenue recognition is often tied to a delivery of product from the seller to buyer. Revenue हमेशा याद रखिएगा तभी recognize होता है when we are talking about the delivery from the production to selling. यानी जैसी प्रोडक्ट बना उसके सेलर तक, यानी डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम सेलर टू बायर, कि जो बेच रहा है उससे उठा के कहां तक जाए, वो बायर तक. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू सी ओवर हेयर प्रोडक्शन, देन मूविंग टूवर्ड्स डिलीवरी, डिलीवरी के बाद कैश कलेक्शन, तो हमारे पास कहां तक आएगा रेवेन्यू. देखिएगा परसेंटेज कंप्लीशन से हमने ये, अब यहां पे एक मेथड है for recognizing the revenue, then point of delivery or completed contract method, and the last one is the installment cost recovery method. हर जगह पे revenue recognize करने का method different है. रेवेन्यू प्रायर टू डिलीवरी किस तरह होनी है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से, ये हम पूरा मेथड देखेंगे इसमें. पॉइंट ऑफ डिलीवरी ऑफ कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे तो वो एट द डिलीवरी होगी, एंड इंस्टॉलमेंट एंड कॉस्ट रिकवरी मेथड जो है वो आफ्टर डिलीवरी पे वर्क करेगा, और उसी इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट को इंस्टॉलमेंट कॉस्ट एंड रिकवरी मेथड को हम लोग कहते हैं आफ्टर डिलीवरी रिकॉर्डिंग ऑफ रेवेन्यू. करंट एनवायरमेंट्स, रेवेन्यू रिकग्निशन इज अ टॉप फ्रॉड रिस्क रिगार्डलेस ऑफ द अकाउंटिंग रूल फॉलोड. याद रखिएगा इससे बड़ा फ्रॉड आजकल होता नहीं है. सबसे ज्यादा ये होता है कि हाँ जी रेवेन्यू कितना शो करना है. देखिए अगर आपको सेल्स छुपानी हो, सेल्स छुपाना सबसे आसान चीज होती है. आप सेल्स छुपा लें, आप किसी को ना बताएं, नोबडी नोज, जिसमें हम लोग कहते हैं कि हाँ जी सेल्स की कितनी इन्वेंट्री थी, कितनी सेल हुई. अगर आप इन दोनों को नहीं मैच कर रहे तो दैट मींस देयर इज अ फ्रॉड एंड देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड आल्सो देयर. डिस्पाइट के जो देखिए IFRS या FASB के जो भी रूल्स हैं वो किस पे अप्लाई कर रहे हैं, अकाउंटिंग पे अप्लाई कर रहे हैं. लेकिन एक चीज जो फिजिकली बिकने के बाद ही आपके पास रिकॉर्ड होनी है, अगर फिजिकल लेवल पे ही उसकी फ्रॉड शुरू हो गया तो दैट मींस के वो फ्रॉड IFRS या FASB के बस की बात नहीं है पकड़ना उसको. तो दैट मींस कि ये फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है. द रिस्क और एरर ऑफ इनएक्यूरेसी इन रेवेन्यू रिपोर्टिंग इज सिग्निफिकेंट, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चीज होती है. रीस्टेटमेंट फॉर इम्प्रॉपर रिकग्निशन आर रिलेटिवली कॉमन, यानी ये हमेशा याद रखिए कि जब भी इम्प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगी तो रिलेटिवली कॉमन एंड कैन लीड टू सिग्निफिकेंट शेयर प्राइस एडजस्टमेंट, यानी दैट इज ऑलमोस्ट रिलेटिवली कॉमन होती है और लीड्स टू सिग्निफिकेंट शेयर प्राइस एडजस्टमेंट, और ये सिग्निफिकेंट शेयर प्राइस एडजस्टमेंट को लेके आती है. Then there are certain guidelines regarding revenue recognition. The revenue recognition principle provides that company should recognize the revenue when it is realized or realizable. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? When we talking about realize कि वो realize हो गया हो, when it is realized, या realizable when there is a certainty to receive it, कि आपको certain हो कि ये receive होना है. एंड वेन इट इज अर्न, या तो वेन इट इज अर्न में, या तो आपको रियलाइजेबल हो कि आपको पता ये मिल जाएगा मुझे, या रियलाइज हो चुका हो, या अर्न हो चुका हो. इन तीनों केसेस में हम कहते हैं द रेवेन्यू विल बी रिकग्नाइज्ड. नाउ रेवेन्यू रिकग्निशन क्लासिफाइड बाय टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन. याद रखिए रेवेन्यू रिकग्निशन हर ट्रांजैक्शन के लिए डिफरेंट तरीके से होती है. टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है देखें, sale of delivery from inventory, rendering of services, permitting use of an asset, sale of an asset. Description of क्या है, revenue from sales, revenue from fee, revenue from rent, revenue from gain. Date of sale of delivery, यहाँ उसी डेट को कर देना है. सर्विस परफॉर्म, जब भी परफॉर्म की जाए, as time passes वो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू आता जाएगा. एंड डेट ऑफ सेल और ट्रेड इन, हर एक का देखिए टाइमिंग के साथ लिंक है और डिस्क्रिप्शन ऑफ रेवेन्यू डिफरेंट है. तो दीज आर द रेवेन्यू बाय टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि ये इस तरह के रेवेन्यू एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें हम नॉर्मली कहते हैं दीज आर नोन एज रेवेन्यू रिकग्निशन टाइप्स, कि यही रेवेन्यू रिकग्निशन टाइप्स होती हैं. Departure from sales basis. Earlier recognition is appropriate if there is a high degree of certainty about the amount earned. अब यहां पे क्या मतलब हुआ कि जब आपके पास सर्टेनिटी बहुत हाई है, दिस वन, तो याद रखिएगा हमेशा सबसे जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप रेवेन्यू को रिकग्नाइज करें. जितनी जल्दी आप रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा. यानी मीन्स टू से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब भी आपने रेवेन्यू को रिकग्नाइज करना है, इट्स बेटर टू evaluate or recognize it as early as possible if you are quite certain regarding the overall sales basis, or you can say you are certain about the recognition of revenue. Delayed recognition कब होती है, जब degree of uncertainty concerning to the amount is
रेवेन्यू और कॉस्ट इज सफिशिएंटली हाई। ये कभी कभी होता यह है कि आपके पास रेवेन्यू रिकग्निशन की सर्टेनिटी इतनी हाई नहीं होती, मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कोई और वजह से आपको सर्टन ना हो कि रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट बैड डेट्स, बैड डेट्स की बात की थी, राइट ऑफ की बात की थी, उनमें एक्चुअली क्या चीजें इन्वॉल्व थी, उसमें यही तो चीजें इन्वॉल्व थी कि आपने उसकी हमें अनसर्टेनिटी थी नहीं तो हम उसे फॉरन रेवेन्यू में से बाहर निकाल लेते थे, वो सॉरी अकाउंट रिसीवेबल में से बाहर निकाल लेते थे, बिकॉज हम लोग कहते थे दैट इट इज नॉट सर्टेन टू बी रिसीव्ड। सेल्स डज नॉट रिप्रेजेंट सब्सटेंशियल कंप्लीशन ऑफ अर्निंग प्रोसेस। जब आपकी सेल्स का कोई एक प्रोसेस रहता हो जिसके अंदर अर्निंग प्रोसेस कंप्लीट ना हो, ये तो नॉर्मली उन सेल्स के लिए सामने आता है जब व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोसेस इन विच यू कैन से दैट बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो, मतलब कि उस सेल के लिए आपको पहले बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, पहले आपको कोई पेपर्स बनवाने हो, पेपर्स बनवा के पास लाने हो, फिर आपको पास सेल होगी, सेल के बाद कोई आफ्टर सेल पेपर्स होंगे, यानी हर स्टेप को इन्वॉल्व होगी इन सेल्स में। तो जब भी इतना कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे तो याद रखिएगा वहां पे अर्निंग प्रोसेस लाए नहीं करता। नाउ रेवेन्यू रिकग्निशन अल्टरनेटिव्स, क्या क्या अल्टरनेटिव एग्जिस्ट करते हैं रेवेन्यू रिकग्निशन के, याद रखिएगा एट द पॉइंट ऑफ सेल तो जनरल रूल है, याद रखिएगा पॉइंट ऑफ सेल जो है तो जनरल रूल है। बिफोर डिलीवरी, बिफोर प्रोडक्शन होती है, ड्यूरिंग प्रोडक्शन, एट कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन, तीन तरह से आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं। आफ्टर कंप्लीशन व्हेन द कैश इज कलेक्टेड और आफ्टर द कॉस्ट इज रिकवर्ड, दोनों की केस में भी आप यहाँ पे रेवेन्यू को रिकग्नाइज कर सकते हैं, इन विच वी से दैट इट इज अ रिकग्निशन ऑफ द रेवेन्यू, कि रेवेन्यू हमने इस तरह से रिकग्नाइज करना है। देन रेवेन्यू रिकग्निशन एट डिलीवरी, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे किसकी, रेवेन्यू रिकग्निशन एट द डिलीवरी, कि क्या हमारे पास रेवेन्यू रिकग्निशन आ रही है। रिकग्नाइज रेवेन्यू व्हेन प्रोडक्ट और सर्विसेज हैज बीन डिलीवर्ड, देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जस्ट आई एम गोइंग टू अंडरलाइन दैट, डिलीवर्ड टू अ कस्टमर एंड कैश हैज बीन रिसीव्ड और रिसीवेबल has been generated by that has a reasonable assurance of collectibility। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, डिलीवर्ड एंड अश्योरेंस ऑफ कलेक्टिबिलिटी, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, डिलीवरेबल एंड अश्योरेंस ऑफ कलेक्टिबिलिटी, ये दोनों चीजें होंगी तो दैट वुड बी इजीली रिकग्नाइजेबल रेवेन्यू, कि जब भी ये दो चीजें एग्जिस्ट करेंगी, वन इज नोन एज डिलीवरी and other one is assurance of collectibility। इन दो चीजों का होना जरूरी है, इसी के साथ आप कहते हैं दैट वी कैन इजीली रिकॉग्नाइज आवर रेवेन्यू। रेवेन्यू रिकग्निशन एट पॉइंट ऑफ सेल, अभी तो हमने कहा था जी एट डिलीवरी, नाउ एट पॉइंट ऑफ सेल कैसे करना है, दैट इज ऑल्सो बीइंग इंक्लूडेड इन द टाइप ऑफ डिलीवरी। अब देखेंगे कि कैसे कैसे एट द पॉइंट ऑफ डिलीवरी ये हमारे पास रेवेन्यू रिकग्नाइज हो सकता है। FASB concept statement number 5, that is from the rules. Companies usually meet two conditions for recognizing revenue by the time they deliver their product or render a service to customer. Implementation किस तरह होती है, sales with discount, sales with right, sales with buyback, bail hold, sales and principal agent, trade loading and channel stuffing and multiple deliverable arrangements. These all things are included in the implementation problem of revenue recognition at point of sales, कि जब आपने revenue recognize कब करना हो, at point of sale, कि जब भी जो भी आपकी सेल की पॉइंट है आपने उसी के टाइम इसकी रेवेन्यू को रिकग्नाइज करना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू रिकग्निशन एट द पॉइंट ऑफ सेल, कि सबसे पहले हमने रेवेन्यू कब रिकग्नाइज करना है, एट द पॉइंट ऑफ सेल। उसके बाद उसकी जो फर्दर टाइप आती है उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज सेल्स विद डिस्काउंट, दैट इज देयर सेल्स विद डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और वॉल्यूम रिबेट्स वुड रिड्यूस कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल एंड रिलेटेड। अब ट्रेड डिस्काउंट और वॉल्यूम डिस्काउंट एक्चुअली होता क्या है, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट के ओके फाइन आई एम गोइंग टू सेल यू द 100 यूनिट्स, आपने 100 यूनिट सेल कर दिए, उन्होंने कहा इफ यू आर गोइंग टू पे अर्ली then only 90 units cost will be charged to you, यानी सिर्फ 90 यूनिट्स की हम लोग क्या चार्ज, परचेज प्राइस आपको चार्ज करेंगे। व्हाट डज दैट मीन, कि आपने 10 यूनिट्स ऑन ट्रेड डिस्काउंट उसे दे दिए, जस्ट बिकॉज कि हाँ जी वो पैसे आपको ऑन टाइम या एट द स्पॉट दे दे,
तो यह आपका इससे फायदा क्या होगा, आपकी जो कैश ने फंसना है अकाउंट रिसीवेबल में, वो कैश में अकाउंट रिसीवेबल में नहीं फंसेगा, और वो नहीं फंसेगा तो दैट मीन्स टू से कि वहां पे हमेशा आपको डिस्काउंट देंगे, और जितना आपको बेनिफिट आप जो पैसा नहीं फंसने से कमा सकते हैं वो आप रिकवर कर लेंगे, ये जितनी कॉस्ट पड़ी है आपको 10 एडिशनल यूनिट्स की। मीन्स टू से कि अगर आपको पैसा नहीं फंसेगा तो आप उसे कहीं और यूज कर सकते हैं, किसी और जगह लगा सकते हैं, और उससे जो अर्निंग होगी दैट वुड बी मच मोर हायर देन द कॉस्ट ऑफ दीज 10 यूनिट्स। इफ पेमेंट इज डिलेड, अगर क्या हो, पेमेंट क्या हो जाए, डिले हो जाए, सेलर शुड इम्प्यूट एन इंटरेस्ट रेट फॉर अ डिफरेंस बिटवीन कैश। अच्छा ठीक है, एक तो हमने कह दिया कि यहां पे जल्दी पेमेंट के लिए आपने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। अगर कोई बंदा ट्रेड डिस्काउंट लेने के बाद ही पेमेंट टाइम पे नहीं देता और उसके बाद ज्यादा पेमेंट लेट करता है, तो इसका हल ये होता है कि आप पेमेंट डिले को इंटरेस्ट से रिकवर करें, कि जितनी पेमेंट डिले हो रही है आप उस पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चार्ज करें और कहें कि हम आप लोगों का रिसीवेबल इस अमाउंट से इंक्रीज कर जाता है। जैसे हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड वाले करते हैं, इफ यू आर नॉट गोइंग टू पे ऑन टाइम तो वो एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट उसकी उस पेमेंट के ऊपर चार्ज कर लेते हैं, दैट इज नोन एज योर इंटरेस्ट अमाउंट, या जिसे कहते हैं मार्कअप चार्ज हो गया है। दैट इज द सेम थिंग इफ द पेमेंट इज डिलेड। Now let's see an example so you have a more clear idea regarding the point of sale. Fact, Samsung company has an arrangement with its customer that it will provide 3% volume discount. कितना? 3% volume. Now volume discount is known as trade discount to its customer if they purchase $2 million of its product during the calendar year. कितने का परचेज करेंगे? $2 million का परचेज करेंगे तो उसने कितना वॉल्यूम डिस्काउंट मिलेगा? 3% का। On March 31st, Samsung has made 700,000 सेल। कितनी की उसने सेल? 700,000 की। इन पास्ट 2 years सैमसंग सोल्ड ओवर 3 million टू आर्टिक इन पीरियड ऑफ April to 31st। सैमसंग मेक द फॉलोइंग एंट्री ऑन March 31st। नाउ फर्स्ट उसने मार्च को करनी है, March 31st को उसने एंट्री करनी है। कितनी सेल हुई? उसने 700,000 की सेल हुई है। अकाउंट रिसीवेबल 679। क्यों 679 हो रही है? बिकॉज वो अज्यूम कर रहा है कि यहाँ पे जो अगस्त 2 million है दैट दे आर गोइंग टू ऑलमोस्ट हैव अ सेल, यानी इतनी सेल आपके पास आएगी। तो उन्होंने ऑलरेडी इस पे क्या लगा दिया, आपको डिस्काउंट लगा दिया 3% का, यानी 700,000 का 97% लिए। So they have taken for the account receivable 679,000 and the sales revenue is 679,000। ये कैसे लिए? 700,000 मल्टीप्लाई बाय 97%, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, दैट इज 679,000। यानी उन्होंने ऑलरेडी इसमें से निकाल दिया है ट्रेड डिस्काउंट उन्होंने दिया, बिकॉज दे आर अज्यूमिंग कि उन्होंने ओवर द इयर्स जो है वो उन्हें ओवरऑल इतने ही की ही उसने ट्रांजैक्शंस करनी है। देखिए यहाँ पे जैसे ऊपर कह रहा है सैमसंग हैड मेड 700 सेल्स टू आर्टिक को, यानी एंड ऑन द प्रीवियस 2 years सैमसंग सोल्ड 3 million टू आर्टिक इन April to December 31st। नाउ अब ये प्रीवियस ईयर्स का यहाँ पे देख के कह रहा है कि इट इज कंफर्म्ड दैट इन दिस ईयर दे आर गोइंग टू हैव अ वॉल्यूम डिस्काउंट, उन्हें भी वॉल्यूम डिस्काउंट मिलेगा। नाउ फर्दर सेम एग्जांपल हैज एन अरेंजमेंट 3% वॉल्यूम डिस्काउंट है। मार्च को 2012 को 700,000 है, इन प्रीवियस 2 years 3 million गई है उसकी फ्रॉम April to December 31st। अज्यूमिंग सैमसंग कस्टमर मीट्स डिस्काउंट थ्रेशोल्ड, क्या हुआ, वो कस्टमर क्या कर गए, डिस्काउंट थ्रेशोल्ड को मीट कर गए। तो सैमसंग क्या एंट्री प्रोड्यूस करेगा, 679,000 कैश, अकाउंट रिसीवेबल 679,000। यानी उसने प्रीवियसली तो सिर्फ रिकॉर्ड किया उसे एज अकाउंट रिसीवेबल्स, बट एक्चुअल में जब उसे मीट भी हो गया तो यहां पे इस तरह की एंट्री पास करेंगे, यानी जितने की एंट्री की उसने अकाउंट रिसीवेबल्स रखा था उतनी एंट्री के अकाउंट रिसीवेबल्स यहां पे आएंगे। हाँ, अगर ये मीट ना करता तब क्या एंट्री होती, दैट वी आर गोइंग टू से किस तरह क्या एंट्री किस तरह वर्क कर सकती है, किस तरह ये एंट्रीज आपस में डिफर कर जाएंगी। नाउ व्हाट इज दैट, सेम एग्जांपल बट नाउ इट इज फेल टू मीट द डिस्काउंट। तो अब क्या एंट्री होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल कैश 700 पूरा लेंगे। अब क्यों लेंगे पूरा, बिकॉज इट इंक्लूड 679,000 प्लस 3% जो हमने लिया था एडिशनल, तो वो भी इसमें ऐड करेंगे तो वी हैव अ टोटल अमाउंट ऑफ 700,000। और साथ ही एंट्री क्या होगी, अकाउंट रिसीवेबल्स में तो 679,000 रखे थे, तो अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होगा, 679 रखेंगे। बाकी अमाउंट क्या कहेंगे इसे, दैट इज नोन एज सेल्स डिस्काउंट फॉरफीटेड। क्या कहेंगे इसे, सेल्स डिस्काउंट फॉरफीटेड। इसका नाम भी हमने रखा था जिसे हमने कहा था नेट मेथड,
क्या कहा था इसे हमने? नेट मेथड यूज किया था फॉर रिकॉग्नाइजिंग ऑफ द सेल्स डिस्काउंट, कि हम इसे हमेशा नेट मेथड यूज करते हैं, जिसके अंदर हम ऑलरेडी अज्यूम करते हैं कि हमें यहाँ पे हर चीज जो है सेल्स डिस्काउंट की जो है वो हम लोग अज्यूम ये करते हैं कि हर सूरत ये लेगा, ये डिस्काउंट को, सेल्स या वॉल्यूम डिस्काउंट को नहीं छोड़ेगा। लेकिन हम लोग उसे इसीलिए अकाउंट रिसीवेबल में सिर्फ उतनी अमाउंट निकालते हैं जिसमें से हम एक्सक्लूड कर देते हैं, जिसे कहते हैं हम से वॉल्यूम डिस्काउंट को। तो इसीलिए, लेकिन जब हमारे पास रिवर्स होता है, फेल टू मीट आता है, तो हम उसे कहते हैं सेल्स डिस्काउंट फॉरफीटेड। नाउ सेल्स विद राइट ऑफ रिटर्न, नेक्स्ट थिंग इज क्या है? सेल्स विद राइट ऑफ रिटर्न। Three possible revenue recognition methods are available when the right of return exposes the seller to continued risk of ownership. यानी three possible revenue recognition methods are available when the right of return exposes, कि जब अगले के पास ये राइट हो गया वो किसी टाइम भी चीज ले गया, जिसे हम कहते हैं मनी बैक गारंटी। अगर उस बंदे के पास ये राइट है कि वो किसी टाइम भी चीज वापस करके पैसे ले जा सकता है, तो उसको हम कहते हैं सेल्स विद राइट ऑफ रिटर्न, जिसे हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम आप टीवी पे भी देखते होंगे, दैट सेल्स विद राइट ऑफ रिटर्न। वो सेल्स विद राइट ऑफ रिटर्न और मनी बैक गारंटी, बहुत दफा बहुत चीजों के लिए वो कहते हैं जी ये देयर इज अ मनी बैक गारंटी फॉर इट, कि अगर ये नहीं चलेगी तो आप पैसे अपने वापस ले जाइएगा, हमें चीज वापस दे जाइएगा, चाहे बेशक यूज्ड ही क्यों ना हो। तो इसे कहते हैं हम सेल्स विद राइट ऑफ रिटर्न। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा रिस्क को एक्सपोज्ड होती है कि आपकी कस्टमर किसी टाइम भी आके कहे कि हाँ जी ये चीज नहीं चल रही, पैसे वापस करो, तो हम इसे कहते हैं सेल्स विद राइट ऑफ रिटर्न। नंबर 1, नॉट रिसीविंग अ सेल अंटिल ऑल रिटर्न प्रिविलेज हैज एक्सपायर्ड, यानी नॉट रिकॉर्डिंग अ सेल्स, जब तक सेल्स को रिकॉर्ड नहीं करना हमने, जब तक अंटिल ऑल रिटर्न प्रिविलेजेस हैज बीन एक्सपायर्ड, कि जब तक उसके पास मनी बैक गारंटी है आप तब तक उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते रिकॉर्डिंग ऑफ सेल के लिए। उसे हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब हम कहेंगे कि दैट इट इज बीइंग एक्सपायर्ड, उसकी मनी बैक गारंटी एक्सपायर हो जाए, तभी हम उसे जाके रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग द सेल बट रिड्यूसिंग सेल बाय एन एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स, यानी कि हम अगर ये दूसरा तरीका क्या है कि रिकॉर्ड करें सेल को हम, बट रिड्यूसिंग सेल्स बाय एन एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स, कि हम उसकी एस्टिमेट को फ्यूचर रिटर्न्स के हिसाब से रिड्यूस कर लें। इन अदर वर्ड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि रिड्यूसिंग सेल, कि आपने फ्यूचर की सेल्स को आप रिड्यूस रखें, आप उन चीजों को इंक्लूड ना करें जो इसमें इंक्लूडेड हैं। मीन्स टू से रिकॉर्ड सेल्स, आपने जब अगर सेल हुई है, अगर उसके पास बेशक मनी बैक गारंटी है, आप उसकी सेल्स को रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड करने के बाद उसके फ्यूचर रिटर्न्स को कम कर लें, कि जो भी हमारे पास फ्यूचर रिटर्न आना है उसको हम रिड्यूस कर लें उस हिसाब से। रिकॉर्डिंग द सेल्स एंड अकाउंटिंग फॉर द रिटर्न एज दे अकर, यानी रिकॉर्ड करते जाएं और उसी तरह सेल्स रिटर्न्स को भी रिकॉर्ड करते जाएं जिस तरह हमने रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स की थी। मींस बोथ साइमल्टेनियसली। नॉर्मली अकाउंटिंग में ये दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ये फर्स्ट वन रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वन एंड देन अदर वन इज द अकाउंटिंग फॉर द रिटर्न्स, कि दोनों को, यानी सेल्स को भी एक तरफ रिकॉर्ड करें, दूसरा सेल्स रिटर्न्स को भी रिकॉर्ड करें, दोनों को रिकॉर्ड करें एट द स्पॉट और दोनों की एंट्रीज, जनरल एंट्रीज पास कर रहे हैं। Now the sales with right of return recognize revenue only if 6 condition has been met. Now these 6 conditions कौन-कौन सी है? First 3 we are going to see कि कौन-कौन सी exist करती हैं। Seller price to buyer is substantially fixed or determinable at the date of sale, यानी कि seller की price क्या हो, fixed हो या वो determine कब हो, at a date of sale, तब आपने उसे रिकॉग्नाइज करना है रेवेन्यू। यानी जिस टाइम भी आपकी उसकी सब्सटेंशियली फिक्स होगी या प्राइस, तभी उसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है एट सेल्स विद राइट ऑफ रिटर्न या एट द स्पॉट डिटरमिन हो, तब रिकॉर्ड करना है। द बायर हैज पेड द सेलर और बायर इज ऑब्लाइज्ड टू पे द सेलर एंड ऑब्लिगेशन इज नॉट कंटीजेंट ऑन रीसेल ऑफ प्रोडक्ट, यानी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ना एग्जिस्ट करता उसके साथ। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर किसी को चीज दे दी, आपको अंडरस्टूड है कि हाँ जी कुछ अरसे बाद मुझे ये पैसे दे देगा, तो दैट मीन्स दैट सेलर इज कंफर्म टू पे और ऑब्लाइज टू पे, लेकिन उसकी ये पेमेंट किसी और कंटीजेंट में ना हो, वो कहे नहीं जी पैसे मुझे किसी और जगह से आएंगे तो मैं दूंगा, तो दैट मीन्स आपने तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करना जब तक वो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट या कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ना हो गया। द बायर्स ऑब्लिगेशन टू सेलर वुड नॉट बी चेंज इन द इवेंट ऑफ थेफ्ट, यानी कि अगर वो कोई भी बायर ऑब्लिगेशन नहीं चेंज होगा अगर उसके पास से सामान चोरी हो गया और फिजिकल डिस्ट्रक्शन डैमेज, बिकॉज जब वो सामान ले गया तो पोजेशन उसके पास है, उसके बाद वो जिसे कहते हैं हम कि चोरी होता है या व्हाटसोएवर फिजिकल डिस्ट्रक्शन इज देयर, सो देयर इज नो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन फ्रॉम द पेमेंट, इट वुड ऑलवेज बी देयर,
कि हमेशा वहीं पे रहता है और वहीं पे ये एग्जिस्ट करता है. Now, the other three conditions. First one, the buyers acquiring the product for resale has economic substance apart from provided by seller. यानी buyer acquiring the product for resale. कि अगर कोई बायर उसे प्रोडक्ट को रीसेल के लिए अक्वायर कर रहा है, हैज इकोनॉमिक सब्सटेंस, क्या हो उसके पास इकोनॉमिक सब्सटेंस अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडेड बाय सेलर, कि यानी वो और चीज हो जो अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडेड बाय सेलर में इंक्लूड हो रही हो. The seller does not have significant obligation for future performance. यानी seller के पास जो है significant obligation है for future performance to directly bring about resale of a product by the seller. यानी seller does not have significant obligation for future performance. कि seller के पास कोई obligation हो कि अगर वो future में perform ना की तो तब क्या होगा, या कर गई तो तब क्या होगा. To directly bring about resale of product. To directly bring about the resale of the product. यानी resale of the product directly bring हो by the buyer. The seller can reasonably estimate the amount of future returns. यानी seller क्या हो सकता है, आराम से उसकी estimate of future returns को easily estimate कर सकता है. Now there is an example, so you have a more clear idea regarding the sales with returns. Placido company is a beta testing stage for new laser equipment that will help patient who had acid reflux problem. The product that Placido is selling has been very successful in trials to date. यानी जब तक trials period में थी तब तक very successful थी. As a result, Placido has received regulatory authority to sell this equipment to various hospitals. ये various hospitals में ये सेल हो रही है because of uncertainty surrounding this product. अब now there is an uncertainty surrounding this product. Placido has granted to the participating hospital to right to return the device and receive full reimbursement for the period of 9 months. अब यहाँ पे उसने क्या कह दिया, मनी बैक गारंटी आपको प्रोवाइड कर दी कि what the money back guarantee would be. When should Placido recognize the revenue for the sales of new laser equipment? उसे कब ये recognize करना चाहिए revenue? First one, given that the hospital has a right to rescind the purchase of purchase for reasons specified in the sales contract, Placido is uncertain about the probability in return. Placido should not record the revenue at the time of delivery. Delivery के time उसने ये record नहीं करना, because ये record कब करेगा, 9 महीने के आखिर में, जब उसके पास ये जो right to receive full reimbursement है वो खत्म हो जाएगा. Placido sold $300,000 of new laser equipment on August 1, 2012 and retained only an insignificant risk of ownership. On October 12, $10,000 is dollar in equipment was returned. यानी कितना equipment वापस आ गया, $10,000 को. तो कैसे रिकॉर्ड हो रहा है देखिएगा. अगस्त 1 की पहले एंट्री करेंगे हम. अकाउंट रिसीवेबल 300,000, सेल्स 300,000. अब ये हमारे पास सेल्स में आ गए. Now on October 15, now there is a entry of sales returns and allowances 10,000. अकाउंट रिसीवेबल्स 10,000. यानी अब क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न उसने डेबिट कर दिया है, अकाउंट रिसीवेबल्स को उसने क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है. यानी इन दोनों के क्रेडिट में ही उसके सामने आ गया, दैट इज नोन एज सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस एंड अकाउंट रिसीवेबल्स. नाउ सेल्स विद रिटर्न्स एट December 31st